Hello everyone, Vinita this side. Welcome back to my channel. I hope you all are fit and fine. So, after completing the reading session of the chapter The Snake and the Mirror, now we are going to start with a little bit summary of the chapter along with their question answers. So, shall we start? Okay. So, The Snake and the Mirror. A summary by Vacuum Muhammad Bashir, the name of the author of this prose. So, the doctor sees his face in mirror. The narrator, who is a doctor, explains his experience with a snake. Narrator, who was a doctor, and he tried to explain his own experience with a snake when he faced एक नरेटर एक वर्णनकर्ता जो एक डॉक्टर है वो अपना खुद का एक अनुभव जो है वो एक्सप्लेन कर रहा है दैट वाज विद अ स्नेक एंड इट वाज अ डे ऑफ हॉट समर नाइट व्हेन ही यूज्ड टू लिव इन अ रूम इन द विलेज ये एक बहुत ही गर्मी भीषण गर्मी की रात का समय था व्हेन ही यूज्ड टू लिव इन अ रूम इन द विलेज जब वो गांव में एक ऐसे कमरे में रहा करता था एक कमरा लेकर रेंट पर व्हेन ही केम टू हिज रूम तब उस दिन जब वो अपने कमरे में रात को पहुंचा सो इट वाज जस्ट अबाउट 10 o'clock 10 बजे के आसपास की कुछ बात थी द डॉक्टर वाज सिटिंग इन अ चेयर in his house at night and wondering how to look more handsome as he watched his face in a mirror अब डॉक्टर जो है वो बिल्कुल पास बैठा था किसके चेयर पे पास में बैठा था चेयर के ऊपर बैठा था घर कमरे में एट नाइट रात को एंड वंडरिंग हाउ टू लुक मोर हैंडसम और सोच रहा था गहन चिंतन में था कि हाउ टू लुक मोर हैंडसम कि ज्यादा सुंदर कैसे दिख सकते हैं एज ही वॉच्ड हिज फेस इन अ मिरर अब जैसे वो अपना चेहरा शीशे में देख रहा था तो वो सोच रहा था कि मुझे और हैंडसम दिखना है तो मैं क्या और कर सकता हूँ सो ही डिसाइडेड दैट ही वुड शेव डेली तो उसने डिसीजन लिया कि वो डेली शेव करेगा कीप अ थिन मॉस्टैक and always have a smile on his face. So he took some decisions. Like, firstly, he decided that he would shave daily. Secondly, keep a thin mustache, छोटी छोटी पतली पतली मूछें रखेगा, and always a smile on his face. और हमेशा उसके चेहरे पर एक smile रहेगी. These measures would make him look smarter and more handsome. अब ये जो चीजें थी जो अगर वो सोच रहा है अगर वो करेगा सो इट वुड मेक हिम लुक स्मार्टर तो इससे वो और ज्यादा स्मार्ट दिखेगा एंड मोर हैंडसम और ज्यादा हैंडसम दिखेगा देन सडनली ही हियर्ड अ नॉइस उसने एक आवाज सुनी देयर वर मेनी रैट्स इन द रूम दैट कॉन्स्टेंटली मेड नॉइस वहां पर कुछ चूहे थे जो लगातार जो है वो नॉइस जो है शोर क्रिएट कर रहे थे Suddenly, a snake fell on doctor's shoulder from above. Because already we have discussed in the chapter reading that the room was shared by वो जो कमरा था ना वो शेयर कर रखा था किसने उसने और चूहों ने रैट्स ने इट वाज शेयर्ड बाय so that time the doctor felt that maybe it was the noise from the rats only. But suddenly a snake fell on doctor's shoulders from above. ऊपर से उसके कंधे पे डॉक्टर के कंधे पे एक स्नेक गिर गया सांप गिर गया It may have come into the house due to the presence of many rats there. हो सकता है कि वो शायद उस कमरे में उस घर में इसलिए आया क्योंकि वहां पे बहुत सारे रैट्स रहते हैं
The snake coiled around doctor's left arm above the elbow. वो उसके कोहनी के ऊपर उसकी बाहिनी बाजू के ऊपर बैठ गया कुंडली मारकर. The snake's hood, उसका जो डंक था, was only 3 to 4 inches from away from the doctor's face. उस डॉक्टर के फेस से सिर्फ 3 से 4 इंच की दूरी पर था. The doctor turned absolutely still in the face of danger so close by. इतनी पास से इतना बड़ा रिस्क देखकर जो डॉक्टर था वो absolutely still हो गया and he was looked like a idol, we can say that, was looked like a stone of flesh. मांस से बना हुआ वो एक पत्थर बन गया. He prayed to God and then realized that he was a foolish and a stupid doctor as he did not have any medicine for snake bite with him. वो भगवान से प्रेयर कर रहा था. Then realized, उसको ये realize हुआ that he was a foolish, कि वो कितना मूर्ख है, and stupid, और कितना बेवकूफ डॉक्टर है, as he did not have any medicine for snake bite with him. कि अगर कोई सांप उसको काट भी ले तो उसके पास तो कोई मेडिसिन भी नहीं है लेने के लिए. वो कितना मूर्ख है, वो डॉक्टर है. Thus he would surely die if the snake bite. तो इसका मतलब तो वो पक्का मर ही जाएगा अगर स्नेक ने उसको सांप ने उसको काट लिया. Because he did not have any medicine. So it was a matter of very great wonder that how was it possible. Then suddenly doctors escape from the snake. अब जो डॉक्टर है वो सांप के काटने से कैसे बच गया. When the snake turned its hood, जब सांप ने अपना डंक जो है वो टर्न किया, वहां से मोड़ लिया, इट सो इट्स रिफ्लेक्शन इन द मिरर ऑन द टेबल, क्योंकि वो अपनी रिफ्लेक्शन अपनी परछाई देखने लग गया उस टेबल पर रखे हुए मिरर में. द स्नेक अनबाउंड इटसेल्फ, उसने अपने आप को खोला, जो कुंडली मार के बैठा था वो खोला फ्रॉम द डॉक्टर्स आर्म, उसकी बाजू से, एंड क्रेप्ट और रेंगता हुआ ओवर टू द टेबल टू हैव अ क्लोजर लुक टू इटसेल्फ, और अपने आप को मिरर में देखने के लिए और रेंगता हुआ टेबल पर चला गया. बट इट वॉज अ वेरी गुड साइन फॉर डॉक्टर एंड द डॉक्टर थस गोट एन अपॉर्चुनिटी टू एस्केप फ्रॉम द हाउस. उसको तो एक बहुत अच्छा मौका मिल गया ना वहां से भागने का, उसको तो एक अवसर मिल गया. He ran very fast, बहुत तेज भागा, and went to a friend's house, और वो अपने एक दोस्त के घर पे चला गया भागता हुआ. After bathing there, वहां पर स्नान कर किया उसने, and he spent the night at the friend's place, और उसने वो रात अपने दोस्त के घर पर ही बिताई. The doctor shifts from the house. अब उसको लगा कि भाई इस कमरे में रहना तो बहुत रिस्की है, यहाँ तो स्नेक आते हैं. So he decided to shift from the house. उसने सोचा कि भाई यहाँ से तो शिफ्ट करना ही बेटर ऑप्शन है. So the next morning, अगली सुबह, the narrator went to his room with his friend. Narrator अपने फ्रेंड्स के साथ, एक फ्रेंड के साथ उस रूम में गया, as he had decided to vacate the house immediately. क्योंकि वो उसी क्षण ही उसने डिसाइड किया कि वो उस कमरे को खाली कर देगा. He went to collect his belongings. अब वो अपना सामान जो उसका था, उसकी ज़रूरतों का जो सामान था, वो वहां से उसको कलेक्ट करने के लिए चला गया. However, he found that some thieves had stolen most of his belongings. वहां जाके उसने देखा कि जो चोर है ना, उसने उसकी बहुत सारी belongings को चुरा लिया है. Leaving behind only one of the doctor's dirty vest. अगर वो कुछ छोड़ के गया है तो सिर्फ एक चीज छोड़ के गया है, और वो चीज क्या थी? Yes, as we have already discussed, like it was one of the doctor's dirty vest. ये उसकी एक गंदी सी एक बनियान थी. So what was the conclusion of the snake and the mirror? The chapter, The Snake and the Mirror,
teaches students that we should not be boastful of our looks and should accept whatever we have and consider it as a blessing from God. द स्नेक एंड द मिरर जो है वो स्टूडेंट्स हमें सिखाता है दैट वी नॉट शो वी शुड नॉट बी बूस्टफुल ऑफ आर लुक्स। हमें अपनी लुक्स को अपनी पर्सनालिटी को देखकर बूस्टफुल नहीं होना चाहिए एंड शुड एक्सेप्ट और हमें वो चीज़ एक्सेप्ट करनी चाहिए वट एवर वी हैव जो हमारे पास है एंड सीरियसली इट वॉज अ गिफ्ट बाय द गॉड। सो कंसीडर इट एज अ ब्लेसिंग फ्रॉम गॉड और उस चीज को मानो जो हमारे पास है इवन आवर पर्सनैलिटी या वी शुड डू समथिंग फॉर दैट बट वी शुड नॉट बी बूस्टफुल ऑफ आवर लुक्स सो वी शुड कंसीडर दैट as a blessings from the god. So I hope you will understand the chapter. Okay, so nextly we do have some ncrt solutions in this video. Discuss in pairs and answer each question below in the short paragraph, about 30 to 40 words. So here we do have the first question. The second was a familiar one. What sound did the doctor hear? जो साउंड थी वो कुछ मिलती जुलती थी। अब वो कौन सी साउंड थी जो डॉक्टर ने सुनी? एंड व्हाट डिड ही थिंक इट वाज? और उसने क्या सोचा कि वो किस चीज की आवाज थी? एंड हाउ मेनी टाइम्स डिड ही हियर इट? और उसने वो आवाज कितनी बार सुनी? एंड व्हेन एंड वेयर डिड द स्टॉप साउंड स्टॉप? और कब और कैसे क्यों वो आवाज जो है वो स्टॉप हो गई? So the doctor heard some noise from above when he opened the door. जब उसने डोर ओपन किया तो उसने ऊपर की तरफ से कुछ नॉइस जो है कुछ शोर जो है वो सुना। He thought that the sound was of rats. उसने सोचा because as we already discussed that the room was shared by the rats and the doctor. वो कमरा शेयर किया हुआ था चूहों ने और रैट डॉक्टर ने। So he thought that the sound was of rats only. So how many times did he hear it? He heard it 4 times. उसने 4 बार आवाज सुनी, including the sound he heard, उस साउंड को मिलाकर जब उसने डोर को ओपन किया था सबसे पहले उसने तब सुनी थी आवाज। अगेन ही हियर दैट साउंड फ्रॉम अबव, अब उस दोबारा उसने वो आवाज ऊपर से सुनी। अगेन केम दैट नॉइज फ्रॉम अबव, दोबारा से आवाज ऊपर से आई। बट सडनली देयर कम अ डल थड, एकदम से बहुत धम की आवाज आई। एज अ रबर ट्यूब, जैसे कि कोई रबड़ की ट्यूब हैड फॉलन टू द ग्राउंड, ग्राउंड पे कोई रबड़ की जो ट्यूब है वो गिर गई। Now, when the sound stopped, the sound stopped when the snake appeared in the front of the doctor. वो साउंड तब रुकी जब स्नेक को डॉक्टर ने अपने सामने देख लिया। It means that was the sound of the snake. That was the not related to the rats. That sound was of snake. Yes. So now we do have the second question. What two important and earth shaking decisions did the doctor take while he was looking into the mirror? कौन से दो important और अर्थ शेकिंग डिसीजन जो है वो डॉक्टर ने लिए थे जब वो मिरर में देख रहा था? So first of all, the two important and earth shaking decisions that the doctor took while he was looking into the mirror are: first of all, he would shave daily and grow a thin mustache to look more handsome. वो डेली शेव करेगा और पतली पतली सी मूछें रखेगा ताकि उससे और वो सुंदर दिखे। He would always keep that attractive smile on his face, और उसके चेहरे पर हमेशा एक attractive सी smile जो है वो रहेगी। Along with that, he also took one more decision to marry with a girl who was very rich and in the field of doctory only, and she had to be fat so that if she would make any silly mistake, she should not be able to she would not be able to run after him. So that was the only decision that was taken by him
but the important and earth-shaking decisions was that only that he would shave daily and grow a thin mustache, and he would always keep that attractive smile on his face. Yes. So now we do have the question number 3. I looked into the mirror and smiled. मैं मिरर की तरफ देखता था, देखा और स्माइल किया. डॉक्टर ने कहा. A little later he says, और थोड़ी देर के बाद उसने कहा that I forgot my danger and smiled feebly at myself. कि मैं अपना खतरा जो है वो बिल्कुल भूल गया और खुद पर हंसने लग गया. So what was the reason behind these 2 points? So what is the doctor's opinion about himself when he smiled first? जब वो पहली बार अपने आप को मिरर में देखा तो तब उसका ओपिनियन क्या था, और जब सेकेंड टाइम उसने स्माइल किया तो तब वो रीजन क्या था. So what way do his things change, his thoughts change in between? अब इस between में, इस बीच में उसकी जो thoughts थी वो change कैसे हुई? So when the doctor smiled first, he was thinking that his smile was very attractive. At first time when he looked into the mirror and smiled, so he was thinking, he was admiring himself, that his smile was really very attractive. And then he decided only that he would always keep that attractive smile on his face. But secondly, when he says, I forgot my danger and smiled feebly at myself, so the thought was completely changed. When he smiled again, he was thinking that he was a poor and a stupid doctor, because being a doctor, he didn't have any single medicine at home. If it would be bitten by the dog, by the snake, अगर उसको सांप काट लेता है ना तो उसके पास कोई medicine नहीं थी. So that's why he was thinking that he was such a stupid doctor. So his thought changed from being a handsome doctor to being a stupid doctor between the two situation. एक हैंडसम डॉक्टर से एक स्टूपिड डॉक्टर की तरफ का जो उसका सफर था ना, उसने उसकी थॉट्स को बिल्कुल चेंज कर दिया. सो हिज थॉट चेंज्ड, उसकी जो थॉट्स थी वो चेंज हुई बिकॉज हिज लाइफ वाज नाउ इन डेंजर. क्योंकि अब उसकी लाइफ खतरे में थी. पहले वो अपने आप को बहुत हैंडसम समझ रहा था तो इसलिए वो स्माइल कर रहा था, बट जहां पर अब उसने स्टूपिड डॉक्टर होने की बात की, at that place also he was smiled because that time his life was now in danger, and he didn't have any single medicine. So that time he felt and smiled at at himself only. So nextly we do have the question, the kind of person the doctor is in the sense of money and possessions. The doctor is a person whose earnings were meager, we can say that, ना के बराबर होना. कि वो जो डॉक्टर था वो पर्सन था जिसकी कमाई बिल्कुल ना के बराबर थी. हिज हाउस वॉज अ स्मॉल रेंटेड रूम. उसका जो घर था, उसका जो था जहाँ पर वो रहता था, इट वॉज अ वेरी स्मॉल रेंटेड रूम. वो छोटा सा रेंट पे रहने वाला रूम था. एंड ही हैड ओनली 60 रुपीज, और उसके पास सिर्फ 60 रुपीज थे. सम शर्ट्स, कुछ शर्ट्स थी, कुछ धोतीस थी, एंड अ सिंगल सॉलिटरी ब्लैक कोट that he has weird at that time only. Next, the kind of person he wants to be by his appearance and by his ambition, what actually he wants to become. He believes in making himself more handsome. वो अपने आप को handsome बनाना चाहता था. He decides that he would shave daily and grow a thin mustache. So for that he uh, he had taken to to important and earth-shaking decisions that he would shave daily and grow a thin mustache. Nextly, question number 2, the person he wants to marry. अब वो person जिससे वो विवाह करना चाहता था. He wants to marry a fat woman doctor who had plenty of money. वो एक ऐसी मोटी औरत से शादी करना चाहता था जो प्रोफेशन से डॉक्टर हो and had plenty of money, और उसके पास बहुत पैसा हो. The person he actually marries, और वो पर्सन जिसके साथ उसकी एक्चुअल में शादी हुई थी वो कौन था, वो कैसी थी. ही मैरिज टू अ थिन
ready person with a gift of sprinter, जो मतलब दौड़ने में अव्वल थी, बहुत पतली दुबली लड़की के साथ उसका विवाह हुआ था. Nextly, his thoughts when he looks into the mirror, and his thought when the snake is coiled around his arm, that was the same that we already discussed. He firstly he smiled because he felt that his smile was very attractive. So when he looks into the mirror, जब उसने mirror में देखा, he thinks that he has a very attractive smile. तो उसने सोचा कि उसकी smile जो है ना वो बहुत attractive है. He decides to keep that smile on his face always. और उसने वहां पे अर्थ शेकिंग डिसीजन लिया, important decision लिए, that he would always keep that smile on his face and he would shave daily. He seems contented when he looks into the mirror. वो बहुत संतुष्ट दिखाई दे रहा था अपनी स्माइल को देखकर जब वो मिरर में देख रहा था. But his thoughts while he was looking in the mirror and laughed and smiled at himself only when the snake is coiled around his arm. But the thought was completely changed. He keeps sitting there holding its breath, अपनी सांसों को रोके या सांसों को थामे वो वहां पर बैठा हुआ था. He thinks that he is a poor and stupid doctor because he didn't have any single medicine at home. If sometimes it happens, like if there was any emergency, like if he was bitten by the snake, he didn't have any single medicine to take it. So if the snake had bitten him, अगर उसको खा लेता ना, he will it will bite him. So definitely the doctor was died. So he is terrified by the snake's presence. So that's why he smiled. So in both the situation, the smile was same, but thoughts were different. So firstly, he was a very admirable person. So for his beauty, he smiled. And second time, he felt he was such a stupid doctor. So that's why he smiled. I hope you will understand. Nextly, we do have some thinking about the knowledge. Here we do have some sentences from the text, and we have to divide that was afraid of the snake. कि ऐसे कौन से sentences हैं जिसमें आपको पता चलता है कि वो सांप से डर रहा था. And secondly, वो कौन सा sentence है that was proud of his appearance, कि वो अपने presence को अपनी appearance को बहुत proudly feel कर रहा है. He was such a admirable person. And when we feel that he had a sense of humor, कि उसमें sense of humor है, and when it was no longer afraid of the snake, कि अब वो कौन सा point है जब वो snake से डर नहीं रहा है. So first of all we do have कि when we felt that he was afraid of the snake, he was turned to stone. Yes, sure. वो बिल्कुल पत्थर हो गया. Same. Yes. For a point that he was afraid of the snake, the first sentence is very appropriate. Second, I was no mere image cut in granite. So yeah, it was also same. Okay. C part. Third one, the arm was beginning to be drain of strength. ये भी ठीक है. That he was afraid of the snake. Fourth one, that I tried. Okay. So one more point was there, that was no longer afraid of the snake. So second point कि अब वो ज़्यादा देर तक पत्थर बन के नहीं बना रहा, तो इस means अब वो डर नहीं रहा था. So B part will be involved in D, that he was no longer afraid of the snake. Then fourth part, I tried in my imagination to write in bright letters outside my little heart the words yes. That time also he was afraid of the snake. I didn't tremble, I didn't cry out. Same, he was afraid of the snake. Next part 6, I looked into the mirror and smiled. A boy attractive smile, like it means he was proud of his appearance. Yes. Nextly we do have I was suddenly a man of flesh and blood. अब वो दोबारा से बिल्कुल नॉर्मल इंसान बन गया. इसका मतलब now he was no longer afraid of the snake. Nextly, we do have I was often, after all, a bachelor and a doctor too on the top of it. It means he was proud of his appearance. Yes. Ninth one,
The fellow had such a sense of cleanliness. Yes, this is a sense of humor. Was it trying to make an important decision about growing a mosaic? Yes, that is also a sense of humor. Okay, so I hope you will learn it. Nextly, we do have, can you find the expressions in the story that tell you that the author was frightened? I was turned. We have to complete the sentence. Yes, I was turned to stone. I sat there holding my breath. अपनी सांसों को थामे बैठा रहा. In the light of the lamp, I sat there like a stone image of the flash. मैं मांस मदिरे से बनी, मांस से बनी एक image हूँ, एक पत्थर हूँ. Okay, so I think you will understand this point. So till here we have completed. So thank you. Have a nice day.